start what? Types of DC generators. Okay. So last class we have discussed about the types of DC generator, how it is being classified. Okay. So ଯେତେବେଳେ তুমি କ୍ଲାସିଫାଇ କରୁଛ means କ'ଣ ଗୋଟେ certain base ରହିବ. Okay. ତ ଏଠି ରହୁଛି base କ'ଣଟା, how the field winding is get excited. କାରଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ୱାଇଣ୍ଡିଂ କେତେଟା ରହୁଛି, ଦୁଇଟା ୱାଇଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି. ଗୋଟେ ରହୁଛି field winding, not lap winding. One is the field winding, another is the armature winding. Okay. So first we want two systems. What is it? Magnet system or field system, and within which the armature will rotate. Field rohibo ta bhitere armature rotate karibo, then only the EMF will be induced in. That is the basic of DC generator. Okay. So सेट ame korthulu konta, first hochi winding ame dekhthulu, field winding rohuchi, field winding to be get excited karon permanent magnet ame use koru konta koru electromagnet. So electromagnet means that will have to be supplied. Jodi electric supply taku no daucho, that will not get magnetized. Then taku supply kemti do. So based on that, so we can say that based on the excitation, the DC generators can be classified into two types. One is separately excited, another is self-excited. Separately excited means जो field winding का दिया है तो सेटा ଗୋଟେ separate source तुमको supply देगा. Okay. So next slide. So again the self-excited DC generators are being classified again into different types. सेटा को केमि self-excited ଯେତେବେଳେ କୁହା ହଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା supply ଯୋଉଟା ଦିଆ ହଉଛି field winding को, that supply will be taken from the armature winding. Armature winding रे तुम्हारा EMF induced हो, EMF induced होला ପରେ ସେଇଠୁ supply ଦିଆଯିବ field winding. Okay, that is the difference between the separately excited and self-excited. Separately excited separate source ରୁ ଦିଆ ହଉଛି, self-excited ତାର जो generation ହଉଛି, जो EMF ରେ generate ହଉଛି armature ରେ, that EMF will be supplied to the field system. Okay. तो डिपेंडिंग ताले कोन होची, जति तुमे आर्मेचर वाइंडिंग रु माने सप्लाई करछो फील्ड वाइंडिंग ताले ता भीतर कनेक्शन रहिबो मींस केता टाइप रो कनेक्शन रहछ. गोटे होची सीरीज कनेक्शन आ गोटे होची पैरेलल कनेक्शन. सो दुईटा वाइंडिंग के तो रहउची आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग. सो दुईटा को हमें कनेक्ट जेतल करियो, आइदर दैट कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कनेक्शंस अगेन दैट विल बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स. गोटे को होची तुम्हारा सीरीज एक्साइटेशन और सीरीज ऑन डीसी जनरेटर, आ गोटे को होची शंट ऑन डीसी जनरेटर, आ गोटे को होची कंपाउंड ऑन डीसी जनरेटर. कंपाउंड ऑन रे कोन आछि द दुईटा फील्ड वाइंडिंग होची, माने टोटल फील्ड वाइंडिंग इज गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. गोटे सीरीज रे कनेक्शन हो, गोटे पैरेलली कनेक्शन. सो अगेन को टाइप रो गोटे सीरीज गोटे पैरेलल जेतळ करा होची, डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप ऑफ कनेक्शन वी कैन से दैट गोटे होची शॉर्ट शंट, गोटे होची लॉन्ग शंट. ओके. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. ओके. सो फर्स्ट वी विल सी separately excited DC generator. So एठी देखो separately excited DC generator जेतल को होची, this is your field system. एटा रहला field winding, एटा रहला armature. तो field winding को सप्लाई दिया होची गोटे सेपरेट सोर्स रे, और सेपरेट सोर्स रे सप्लाई देला पर field winding को करंट जल्दी रिसीव होची, तो करंट डायरेक्शन एपट होची. ओके. तो field winding magnetic field create कला, magnetic field create कला पर the armature will rotate within that magnetic field. ताला armature जेतल रोटेट करछि, एटी EMF induced होबो, and due to that the current will be flow to the load. Okay. तो बर्तमान एटी होछि यार मेन माने मेरिट्स कोन एडवांटेज कोन एक्चुअली ना फील्ड वाइंडिंग संगे यार किछ कनेक्शन नाही, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किछ अछि नाही. तेरो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जेतु नाही, दिस इज टोटली इंडिपेंडेंट. हमें फील्ड एक्साइटेशन को हम मन इच्छा में बढ़ाई पाइबा. यदि एटी हम वोल्टेज बढ़ाइबा, सपोज एटी गोटे रियोस्टेट देखिए देखिए करंट इंक्रीज कर दियो, करंट इंक्रीज माने ऑटोमेटिकली द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड रो स्ट्रेंथ इंक्रीज करियो. ओके. सो कंप्लीटली फील्ड वाइंडिंग रो जो एक्साइटेशन रहउची, द स्ट्रेंथ ऑफ एक्साइटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जनरेटेड EMF. एटी को जते जनरेट होची ता संगे यार के संपर्क करो. ओके. ये सेपरेट सोर्स. सो जेतोल ताले बर्तमान एटी जदी EMF जोटा जनरेट होडो हम बात करले कोन EG इज द जनरेटेड EMF. So EG generated EMF होला माने लोड अक्रॉस में जो वोल्टेज दिया होता दैट इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज. तो दुईटा वोल्टेज होला, गोटे होची जनरेटेड वोल्टेज आ गोटे होची टर्मिनल वोल्टेज. व्हाट इज द मन रखियो बोलके और जनरेटेड EMF और टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस कोन ना. एठी तो आर्मेचर वाइंडिंग रे तो EMF जनरेट होला, तापर करंट फ्लो करियो. करंट फ्लो का फ्लो देई करियो, आर्मेचर वाइंडिंग फ्लो देई करियो.
ତେଣୁ ଆର୍ମେଚର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ଥ୍ରୋ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ଆର୍ମେଚର ୱାଇଣ୍ଡିଂ ର ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି there will be some voltage drop. ଓକେ, ତେଣୁ ଏଠି EMF ଜେନେରେଟ ହେଲା ଇଜି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି ଲୋଡ୍ ପାଖକୁ କିଛି voltage drop ହେଇଯାଉଛି. Voltage drop generally we are giving it as IR drop. I is the current flowing through that conductor and R is the resistance of that conductor. ତେଣୁ ଏଠି resistance of the conductor means armature conductor resistance ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି. So armature conductor ଟାକୁ resistance କହୁଛି RA, A for armature. Okay, and whatever the current is going, it is here is IA दिया होची. IA means what? Simply current is I, but mention करा होची A for armature because the current is flowing from the armature. Simply तक दिया armature current. So armature current ला IA and armature resistance होची R. So therefore the voltage drop will be IA into RA. So therefore you will get the equation V is equals to EG, this is the generated EMF, minus the voltage drop IAR. डायग्राम भी कर लिया. ओके, हम डायग्राम करूँगी तो तुम्हें डायग्राम भी कर लीजिए. सो एठी तो सप्लाई दिया होची, फील्ड करंट दिया होची, करंट सप्लाई दिया होची IF. ओके, सो IF से तो दिया होची, एठी सपोज सप्लाई वोल्टेज दिया होची VS, सोर्स वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज यू कैन से. So therefore IF will be equals to supply voltage VS divided by RF. RF is the resistance of the field winding. और तुम्हें इक्वेशन गुड़ा को सबले मन रखो कारण जतले न्यूमेरिकल्स आसीओ यू हैव टू गो थ्रू दीस इक्वेशंस. सो दुईटा इक्वेशन रहला, गोटा वोल्टेज इक्वेशन फॉर द जनरेटर दैट इज V is equal to EG minus IA into RF. And तापर गोटा आस्ते फील्ड वाइंडिंग रा करंट. So field current is given as source voltage that is the supply voltage or source voltage that is VS divided by the field resistance that is RF. Okay. Okay. Next is zero. So this is your separately excited DC generator. So next we will go to the self-excited generators. So सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जेतले को आउची एटी कोन लागत सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जेतले जे हेतला फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ए सेपरेट सोर्स सेटे तक बोल सेपरेटली एक्साइटेड. बटन सेल्फ एक्साइटेड जेतले को आउची फील्ड वाइंडिंग विल बी सप्लाइड फ्रॉम द आर्मेचर इटसेल्फ. आर्मेचर जेतले रोटेट करछि आर्मेचर रे EMF इंड्यूस्ड होला परे सेटू करंट फ्लो करिवो फील्ड वाइंडिंग. सो देयरफॉर देयर मस्ट बी ए कनेक्शन बिटवीन द आर्मेचर वाइंडिंग एज वेल एज द फील्ड वाइंडिंग. ओके, so armature winding और field winding को इधर connect कर जो if that will be connected in series then that is known as the series of DC generator. Okay, so like the self excited generator first out is separately excited generator like ये और कहीं पर separately excited generator का ऊपर ये लिखी दे वो लाइन depending on starting here लिख दो depending on the type of excitation the DC generators are being classified. The DC generators are being classified into two types. One, separately excited generator. Second one, self-excited generator. Self-excited generator. Okay. Separately excited generator जानिए होगा. That is the generator in which the field winding is supplied from a separate source. Okay, or an independent source भी कोई नहीं. So next write down self-excited. In self-excited generators,
in self-excited DC generators, the field winding in self-excited DC generators, the field winding is get excited from the EMF induced in the armature. Okay. So, depending on the type of interconnection between the armature winding and field winding, these are classified as follows. Okay. So first one is DC series owned generator. DC series owned generator. Okay, diagram for this. DC series owned generator. In these generators, the armature winding is connected. The armature winding is connected in series with the field winding. Okay. Okay. Now it is our field winding rotator. Since we have colored bottom set field winding, when it is connected in series, that is known as the series field winding. When parallelly connect that is short field winding, but same field winding. That depends on the type of connection. Okay. So it is equal to series connection. We are saying it as a series field winding. So this is the armature. Armature संग series connection then it is going to the load. So now see here, voltage equation can be the generated EMF is easy. Okay. Now, what are the current flow karibo load paku jibo. So load paku kala pare what are the resistances through which the current will flow. Ko resistance flow deki tomara current aje. First hochi armature resistance flow deki jibo. Then series field resistance flow deki jibo. Okay. Tapore load ko jibo. Then armature resistance kete Ra, series field resistance RSE karo. So RA, this is the armature resistance, RSE, SE for series. Okay, so RSE, this is the resistance of the series field winding. अच्छा, बर्तन दुईटा भितर देखो करंट सेम रोज ना डिफरेंट करंट फ्लो करियो. आर्मेचर वाइंडिंग ये तो सीरीज कनेक्शन अछि, so therefore the same current will flow through the armature as well as series. Okay, तो voltage drop कितना हो? आर्मेचर जो voltage drop हो that is IA into RA and तापर हो जास्ती IA into RSE. Okay, कारण जितना आर्मेचर थ्रू देखि दियो सेठी voltage drop आसो IA into RA. যেতବେଳେ সিরিজ ফিল্ড থ্রো দেখি যাচ্ছে সেটি ভোল্টেজ ড্রপ হবে IA into RS. Okay, so therefore what is the voltage now? So V is equals to, this is the terminal voltage. Terminal voltage means that is the voltage across the load. Okay, so voltage across the load is equal to
This is the generated voltage Eg minus the voltage drops. जबकि उड़ा drop है, so पूरा को subtract कर नहीं. So therefore, this will be equals to Eg minus देखो ये IARA and IARS. So therefore, I can take IA common. IA into RA plus RSE. This will be a voltage equation. Okay. And one more thing, देखो ये load current जेतबेले भी दिया होची, load current सबला high रहे. And load current depends on the load. If the load is more, current will also be more. Okay. तो load current जेतबेले भी रहउची, load current meaning कोन? जनरेटर को तुम कनेक्शन करछो गोटे लोड संगे लोड हे पारे 100 वाट हे पारे 1000 वाट भी हे पारे सो लोड जते अधिक रही ऑटोमेटिकली मोर करंट विल फ्लो तो जो करंट भी फ्लो होचे दैट विल फ्लो थ्रू द आर्मेचर एज वेल एज द सीरीज फील्ड तो जदि हाई करंट फ्लो करिवो जदि रेजिस्टेंस भी हाई हो देन अल्टीमेटली वोल्टेज ड्रॉप विल आल्सो बी हाई फर्स्ट होची वोल्टेज ड्रॉप हाई रहिबो एंड व्हेनेवर द करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर हीट प्रोड्यूस्ड ओके तो हीटिंग इफेक्ट जोटा होची हीटिंग इफेक्ट जनरली इट इज बीइंग गिवन एज I square R. So the resistance be high रहिबो, current be high रहिबो, then more heat will be produced. Okay. यदि more heat produced होगा then ultimately जो insulations दियो that may break down. So therefore what we will have to do, the resistance of the armature as well as the series field that should be very less. Very less means that should be less than 1. Generally देखो तो 0.3, 0.4, 0.2 armature as well as series field. Okay, so like here, the resistance of the series field, resistance of the series field and armature is always less. Less than 1 going to but that is normally it will be some 0 point something less than 1 years okay अच्छा so series field winding को जब हम resistance को कम करेंगे resistance का ऊपर डिपेंड करे R is equal to rho L by A so rho the materials को depend करती generally we are using the copper material so length L should be less A should be high but the denominator is so denominator is going to reduce the resistance we will have to increase the length reduce the length and increase the cross sectional area तेणु एठी जो रेजिस्ट माने जो वायर लागि थिबो तार लेंथ कम थिबो जदि लेंथ कम अछि दैट मींस द नंबर ऑफ टर्न्स विल बी लेस एंड नंबर ऑफ टर्न्स जदि दुईटा नंबर ऑफ टर्न्स थिबो जतकी लेंथ हो 4 नंबर ऑफ टर्न्स कर देले कोन लेंथ बढ़ी जाउछ सो टू रिड्यूस द लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी लेस Similarly, area cross section should be more. So area cross section more means what? Thick wire. Okay. Like this, right? To have less resistance, the series field winding should have the series field winding should have less number of turns and more मैं सेटा कौन लिख परिबो थिक लिख परिबो and more thickness okay because we are using thick wire with less number of turns okay next eta gala tomorrow DC series mode generator equation সকল মনে রাখো so next we will go to the DC shunt mode generator DC shunt mode generator diagram कर दो So DC shunt mode generator तले को होची
In this case, shunt means what? Parallel. ଯେତେବେଳେ କି shunt କୁହାଯାଏ, that is always parallel. That means in this case, the field winding and armature winding, these two windings should be connected in parallel. Okay, so this series connection thila, एटी आसीगला parallel connection. So এটা হলো field winding, এটা হলো armature winding. So both are connected in parallel. Okay, then that is being the supply is being given to the load. अच्छा, एटी वर्तमान source किए रहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कोठी होची आर्मेचर होची तेणु करंट कोठु बाहर आर्मेचर जेतले जाउची दैट करंट इज आईए ओके देन एठी आसीगला तार दुईटा पाथ आसीगला गोटे एपटे गोटे जीव लोड आ गोटे जीव फील्ड वाइंडिंग तेणु फील्ड वाइंडिंग को जो करंट गला दैट इज एसएस फॉर शंट ओके नेमिंग गुरा खाली करंट को खाली नेम करा होची जोटी सीरीज फील्ड सीरीज करंट थिवो सेठी एसी लेवल रो जोटी शंट थिवो सेठी एसएच. So ISS is the field current which is going to the shunt field. Okay. अच्छा parallel connection है जी माने what about the voltage? दुईटा सारा same रही. दुईटा सारा same रही means what is the voltage across the armature? Voltage across. वो बोली जे generated EMF बोली. Generate ହେଲା ପରେ voltage generate ହେଲା केते? EG. तापर current flow करिवो. करंट फ्लो कला माने आर्मेचर वाइंडिंग भितर रेजिस्टेंस माने वोल्टेज ड्रॉप हो ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर रो जेहेतु रेजिस्टेंस रहिछि त वोल्टेज ड्रॉप हो त वोल्टेज ड्रॉप मींस वोल्टेज रहि दैट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द आर्मेचर एंड दैट इज नोन एज द आर्मेचर वोल्टेज ओके एंड दैट वोल्टेज मस्ट बी इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस द शंट फील्ड ओके सो देयरफॉर टेक दिस ओवर द वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर voltage across the armature so that VA कर दो जी VA is equal to EG minus IAR है okay अच्छा what about the current equation total current is IA that is being get divided into two parts one is shunt field current ISH another एपटे जोटा आछि load current IL. Okay, so to increase the field resistance, we have to use the windings having more number of turns and cross-sectional area should be less means thin wires. Okay, make it here. Therefore, thin wire having more number of turns are used in the field winding. ताले तुम्हारा series field रे कौन रहेला less number of turns and thick wire. एटी रहेला कौनटा more number of turns having thin wire. Okay, so now we are getting current is equal to field current is given as ISH is equal to V by RSH. Okay, so next we will write the voltage equation. Voltage equation means the voltage across the तीनटा parallel ଅଛି. So ultimately the voltage across the load, voltage across the armature and voltage across the field winding all should be same. So you can write voltage across the load is V is equal to voltage across the armature that is EG minus IA into RA and that is equals to voltage across the field winding that is ISH into RSH. Okay, so from these equations we can be able to find out any current or any voltage whatever being given in the problems. Okay, so this is your shunt field winding, shunt wound DC generator. So next we will see the DC compound generator. So right now next one is DC compound wound generator. Diagram करियो जो कोई साला पर diagram करियो and this is again classified compound wound generator. So এটা compound বুলি কাই কোৱা হৈছে सबुरा लागे देखले series field रे only one field winding is connected in series with the armature and in shunt field winding only one field winding is connected in parallel with the armature
But in this, we have two field windings. One will be connected in series, another will be connected in parallel. Okay, so therefore it is known as compound because this is neither series nor parallel. Okay, so depending on the type of connection, like this, depending on the type of connection, the compound generators are classified into two types. Okay. So first one is short shunt compound node generator. Short shunt. So name suggests itself. যেটা আমি short shunt বলছি, shunt means parallel. So যেটা parallel থিব that should be short. কেমতি short হবো? That means এই পার্টটা parallel হচ্ছে। কোয়াইজি কোনটা? compound means গোটে রইব parallelly connect হবো, গোটে series connection হবো। তো দুইটাই তো। আইদার আগে সিরিজ করি কি তারপরে parallel করিব, না আগে parallel করি কি তার সঙ্গে সিরিজ কানেকশন করিব। ওকে, সো শর্ট সার্কিট যেটা কোয়া হচ্ছে, দেখো আর্মেচার এন্ড ফিল্ড ওয়াইন্ডিং both are connected in parallel. কারণ parallel connection এটা শর্ট হয়ে গেল কেন? যদি এইটাকে আমি ডাইরেক্টলি এটি কানেকশন করব তাহলে প্যারালালটা লং হয়ে যাবে, তাহলে দ্যাট উইল বি লং সার্কিট। এট কি only difference. So right now in this type of generators or in these generators the shunt field is connected in parallel with the armature winding and the combination is connected in series. Combination is connected in series with the series field winding. Okay, that means what will the first connect हो parallelly, माने shunt field winding को connect करो armature संगे parallelly, combination संगे series रे connection. Total এই দুইটার parallel combination संगे series field combine करा वाला in series. Okay, so what will be the direction of current? Current division का सब पढ़े. Current division होचे तबले first हो चेक देखो armature रे EMF induce कला, चलो एक सोर्स रूट सबले एक करंट फ्लो करिवो, चलो एक तो करंट फ्लो करछि दैट टू पाथ्स ना, गोटा होछि शंट फील्ड को जाउछि आ गोटे सीरीज फील्ड थ्रू दे लोड को जाउछि। चलो एपटे जो करंट आगला शंट फील्ड को लेट दैट बी आईएसएच। ओके, डायग्राम कर दियो, सो एपटे जो शंट फील्ड को जो करंट गला दैट इज आईएसएच, जोटा सीरीज फील्ड थ्रू दे गला सेटा जो तुम लोड करंट कोइ पर और सीरीज फील्ड करंट आईएससी करि पर किबा आईएल करि पर। current division যেতବେଳେ রହୁଛି IA is equals to ISH plus IL. Total current is IA, that is armature current, দুইটা পাথে ডিভাইড হলা ISH গলা এপটরে গলা IL, তাহলে এই দুইটার সাম হচ্ছে IA। ওকে, এটা হলো কারেন্ট ডিভিজন। দেন ভোল্টেজ বর্তমান দেখিও কোন না, ভোল্টেজ এই দুইটা প্যারালাল রইব, ইয়ার সঙ্গে যেতি ইয়া অ্যাক্রস লে আর্মেচার অ্যাক্রস লে যেতি ভোল্টেজ রইব the same voltage will appear across the shunt field winding. ওকে, তারপরে এই দুইটার সাথে প্যারালাল কি হচ্ছে, এইটা লোড সিরিজ ফিল্ড এন্ড লোড তার কম্বিনেশনটা প্যারালাল হই পারিব সেটা। ওকে, সো देयरफॉर voltage across the shunt field winding that will be given as ISH into RSH. This is the voltage across the shunt field winding. That should be equals to the voltage across the armature winding. Armature winding across the voltage कितना हो
जनरेटेड ईएमएफ इज Eg माइनस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं करंट जो होची Ia रेजिस्टेंस इज Ra so Ia into Ra so this should be equals to this okay then that should be equals to या across the voltage केते अछि लोड across the terminal voltage is V बर्तमान देखो करंट फ्लो होची कोन आर्मेचर पाखु एपटु जाउची तने जेतेबेले आमे एपटु जाउची so this voltage plus this drop will give you the voltage across this सेटा डिपेंड करे करंट माने वोल्टेज देखो एठी मोर दिया होची यदि एठी मो गोटे सोर्स देली एठी यार वोल्टेज V एठी गोटे रेजिस्टेंस देली R एठी करंट वाला I so now what is the voltage across this V minus IR अच्छा यदि मो एटा को चेंज कर देली एपटे गला वोल्टेज बर्तमान it will be V. So in this case, the voltage across this hole is V plus IR. Okay. So तो current direction ऊपर depend होगी. कारण हमरो current आसी को एटू आसी तो एटी voltage जति की drop होला परे जाय के आसी V. Okay. कारण voltage एटी ए पॉइंट आ ओई पॉइंट ए दुटा भीतर voltage केते रहइबो total voltage minus this drop is equal to V. So what is the total voltage? V plus this drop. Okay. So this should be equals to V plus voltage drop केते होची सेठी अछि IL into RAC तनो ए तीनटा voltage सेम रहला this is the voltage across the shunt field winding this is the voltage across the armature this is the voltage across the load plus series field okay तनो ए तीनटा बिटू you can find out any type of equations okay so this is your short shunt compound load generator okay so next I want to call this one so next write down long shunt compound load generator last one this is long shunt compound load generator so long shunt जेतले कहछि the shunt means parallel should be long तमाने कोन होछि short shunt रे कोन होतला आगे parallel connection करथलो combination संगे हम series connection करथलो एठी कोन हो ना आगे सीरीज कनेक्शन हो कॉम्बिनेशन संगे पैरेलल कनेक्शन हो ओके सो लेट रेडी इन these generators the armature is connected in these generators the armature is connected in series with the series field winding and the combination is connected in parallel with the shunt field winding. Okay. So draw the diagram and see the current direction. So it is the current direction bar करो. All of the current direction of the current starts from the armature. And I do EMF induced light. तेणु EMF generate ला करे into current flow कला. तेणु armature रे जति current flow करिवो the same current will flow through the series field winding. Okay. तापर एटा डिवाइड जो को पड़तो. गोटे वाला shunt field winding आ गोटे वाला load. So therefore एटी मो armature current लिखि पारे कि series field current लिखि. जोटा लिखले भी ठीक होय. But basically as the current is flowing from the armature we are saying it as armature current. So now current equation is IA is equals to ISH plus IL. अच्छा now बर्तमान देखो parallel connection कोन होची गोटे होची voltage across the shunt field ता संगे parallel के रहै छै armature and series field. Then the total voltage across the armature and series field will be equals to the voltage across the shunt field and that is equals to the terminal voltage. Okay. तो तीनटा वोल्टेज को इक्वेशन कर दिया. So V will be equals to
केतना डाटा Eg, this is the generated EMF minus the voltage drops. Voltage drops means Ia into Ra plus Rs. It will voltage drop Ia into Ra, it will Ia into Rs. Okay, so the total voltage drop is Ia into Ra plus Rs. Okay, and that will be the voltage across this whole combination. And this should be equals to ISH, RSH. This is the voltage across this one field winding. Okay. So this is all about the different types of DC generator, which depends on the types of connection or the types of excitation. Okay. So in the next class we will discuss some numericals on the different types of generators. Okay. Thank you. Okay. So to increase the field resistance, we have to use the windings having more number of turns and cross-sectional area should be less, means thin wires. Okay, make it here. Therefore, thin wire having more number of turns are used in the field winding. ताले तुम्हारा series field रे कौन रहेगा? Less number of turns and thick wire. एटी रहेगा कौन टा? More number of turns having thin wire. Okay. So now we are getting current is equal to field current is given as ISH is equal to V by RSH. Okay. So next we will write the voltage equation. Voltage equation means the voltage across the तीन parallel है. So ultimately the voltage across the load, voltage across the armature and voltage across the field winding all should be same. So you can write voltage across the load is V is equal to voltage across the armature, that is Eg minus Ia into Ra, and that is equals to voltage across the field winding, that is ISH into RSH. Okay. So from these equations we can be able to find out any current or any voltage whatever been given in the problems. Okay. So this is your short field winding, short root DC generator. So next we will see the DC compound generator. So right now next one is DC compound wound generator. Diagram करेगा जो कोई साला पूरा diagram करेगा. And this is again classified compound wound generator. So এটা compound बोली कहीं हुआ उसे. So पूरा लाने देखिए series field रे only one field winding is connected in series with the armature, and in shunt field winding only one field winding is connected in parallel with the armature. But in this we have two field windings. One will be connected in series, another will be connected in parallel. Okay, so therefore it is known as compound because this is neither series nor parallel. Okay, so depending on the type of connection, like this, depending on the type of connection, the compound generators are classified into two types. Okay. So first one is short shunt compound wound generator. Short shunt. So name suggests itself. जेता मैं short shunt को, shunt means parallel. So जोटा parallel थी वो that should be short. केमती short होगा? That means ए पार्ट parallel होची. वो आई जी कौन टा? Compound means गोटे रही वो parallel connect होगा, गोटे series connection होगा. तो दुई टाइप हो. Either आगे series करी कि तापरे parallel करी हो, ना आगे parallel करी कि ता संगे series connection करी. Okay. So short shunt केता को होची?
देखो आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो पैरेलल कनेक्शन एट शॉर्ट हो गला के जदि एटा को मैं डायरेक्टली एठी कनेक्शन कर दो तो पैरेलल टा लॉन्ग हो सकता है दैट विल बी लॉन्ग सर एटकी ओनली डिफरेंस सो राइट डाउन in this type of generators or in these generators the shunt field is connected in parallel with the armature winding and the combination is connected in series combination is connected in series with the series field winding. The series field winding. Okay, that means what होगा first connect हो parallelly माने shunt field winding को connect करो armature संगे parallelly combination संगे में series रे connection total ए दुटा parallel combination संगे series field combine करा वाला in series. Okay, so what will be the direction of current division का सब पढ़े current division हो जाता है first हो चेक देखो armature रे EMF induce कला चलो ए टू सोर्स रूट सब ए टू करंट फ्लो करिवो चलो ए टू करंट फ्लो करछि दैट हैव टू पाथ्स ना गोटा होछि शंट फील्ड को जाउछि आ गोटे सीरीज फील्ड थ्रू दे लोड को जाउछि चलो एपटे जो करंट आगला शंट फील्ड को लेट दैट बी आईएसएच ओके डायग्राम कर दियो सो एपटे जो शंट फील्ड को जो करंट गला दैट इज आईएसएच जोटा सीरीज फील्ड थ्रू दे गला सेटा जो तुम लोड करंट कोइ पर और सीरीज फील्ड करंट आईएससी कोइ पर किबा आईएल कोइ पर current division যেতলে রହୁଛି IA is equals to ISH plus IL total current is IA that is armature current দুইটা পাথে ডিভাইড হলা ISH গলা এপটরে গলা IL তাহলে এই দুটোর সাম হচ্ছে IL ওকে এটা হলো কারেন্ট ডিভিজন দেন ভোল্টেজ বর্তমান দেখিও কোনটা ভোল্টেজ এই দুইটা প্যারালাল রইব ইয়ার সাথে যেতি ইয়া অ্যাক্রস লে আর্মেচার অ্যাক্রস লে যেতি ভোল্টেজ রইব the same voltage will appear across the shunt field ওকে তারপরে এই দুইটার সাথে প্যারালাল কি আছে এটা লোড সিরিজ ফিল্ড এন্ড লোড তার কম্বিনেশনটা প্যারালাল হই হই বসতে হবে ওকে সো देयरफॉर voltage across the shunt field winding that will be given as ISH into RSH is the voltage across the shunt field winding that should be equals to the voltage across the armature winding across the voltage कितना हो generated EMF is EG minus armature voltage drop कितना है current जो है IA resistance is RA so IA into RA so this should be equals to this okay then that should be equals to ये across the voltage कितना है load across the terminal voltage is V बर्तमान देखो current flow होची कोन armature पास में एपटू जाउछ तने जेतेबेले आमे एपटू जाउछि so this voltage plus this drop will give you the voltage across this सेटा डिपेंड करे कारण माने वोल्टेज देखो एठी मोर दिया होछि जदि एठी मो गोटे सोर्स देली एठी यार वोल्टेज V एठी गोटे रेजिस्टेंस देली R एठी करंट वाला I so now what is the voltage across this V minus IR अच्छा जदि मो एटा को चेंज कर दे एपटे वाला वोल्टेज वर्तमान এটা দেবি V so in this case the voltage across this hole is V plus IR okay সেটা তোমার কারেন্ট ডাইরেকশন উপর ডিপেন্ড করছে কারণ আমরা কারেন্ট আসছে কোড এটু আসছে তো এটি ভোল্টেজ যেতিকি দিব ড্রপ হেলা পরে যাইকে আসছে V ওকে কারণ ভোল্টেজ এটি এই পয়েন্টটা ওই পয়েন্ট এই দুইটা ভিতরে ভোল্টেজ কত রহিব টোটাল ভোল্টেজ মাইনাস দিস ড্রপ ইজ ইকুয়াল টু V
So what is the total voltage? V plus this drop. Okay. So this should be equals to V plus voltage drop केते होची सेठी अछि IL into RS. तो ए तीनटा voltage सेम रहला. This is the voltage across the shunt field winding, this is the voltage across the armature, this is the voltage across the load plus series field. Okay. So ए तीनटा भितर you can find out any type of equations. Okay. So this is your short shunt compound generator. Okay. So next, I will tell you. So next write down long shunt compound generator. Last one is one. This is long shunt compound generator. So long shunt the shunt means parallel should be long. तामाने कौन होती? शॉर्ट शंट रे कौन होता? आगे पैरेलल कनेक्शन करथलो, कॉम्बिनेशन संगे सीरीज कनेक्शन करो। एठी कौन हो? ना आगे सीरीज कनेक्शन हो, कॉम्बिनेशन संगे पैरेलल कनेक्शन हो। ओके, सो लेट मी रेडी। In these generators, the armature is connected. In these generators, the armature is connected in series with the series field winding, and the combination is connected in parallel with the shunt field winding. Okay, so draw the diagram and see the current direction. So it is the current direction bar करो. All of the current direction of the current starts from the armature. And I do EMF induced कलाई. तेणु EMF generate ला करे into current flow कला. तेणु armature रे जति current flow करिवो, the same current will flow through the series field winding. Okay. तापर एटा dividing जो करतो. गोटे वाला shunt field winding, आउट वाला load. So therefore, एटी मो armature current लिखि पारे कि series field current लिखि. जोटा लिखले भी ठीक होबो. But basically as the current is flowing from the armature, we are saying it as armature current. So now current equation is IA is equals to ISH plus IL. अच्छा now वर्तमान देखो parallel connection कौन होची गोटे होची voltage across the shunt field ता संगे parallel के रही armature and series field. Then the total voltage across the armature and series field will be equals to the voltage across the shunt field and that is equals to the terminal voltage. Okay. तो तीनटा वोल्टेज को इक्वेशन कर दिया. So V will be equals to क्या करेगा? EG, this is the generated EMF minus the voltage drops. Voltage drops means IA into RA plus RSC. एटी वाला voltage drop IA into RA, एटी वाला IA into RSC. Okay, so the total voltage drop is IA into RA plus RSC. Okay. And that will be the voltage across this whole combination. And this should be equals to ISH, RSH. This is the voltage across this shunt field winding. Okay. So this is all about the different types of DC generator, which depends on the types of connection or the types of excitation. Okay. So in the next class, we will discuss some numericals on the different types of generators. Okay, thank you.